Okay, lying down, feet apart, hands apart. थोड़ा सा mat उधर कर लो. इधर. Head to this side, legs that side. Legs that side. As we lie down, find more space in the body. We shall practice something known as QRT, quick relaxation technique. So, like a bird eyes view, observing the body from the outside, observe the placement of the feet, legs, hips, torso, shoulders, arms. Observe the position of the head, now from the bird eyes view, become an ant who is traveling inside the body, observing the inside of the toes, observing the inside of the legs, observing the hip, the groin, observing the torso, the spine and the organs, shoulders, shoulder blades, observing the arms, observing the head, face, and now observing the heart, heartbeat,
Slowly, gently, creating movement in the fingers and the toes, bringing the legs together, feet together, interlocking the fingers, taking the arms over behind the head. Inhale deeply and stretch the body completely. Exhale and release. Gently turning over the right side. So fold the left leg, turn over to the right. Stay there. Using the left hand, push into the floor, sitting up and continuing into an on four position, coming on the knees and the hands. And just for a moment, sit back, stretch the arms forward. Adho Mukha Virasana. Letting the knees spread out to the side, creating more space for the chest. With slow movements, slowly walking back with the hands, finding yourself a vajrasana, sitting comfortably on the back of the feet. If not comfortable, you can cross your legs, but try to do this for at least 30 seconds to 1 minute. Hands in Namaskar Mudra, rolling the shoulders back if required, lifting the spine up, engaging the core a little bit, engaging the belly button a little bit towards the back. 3 times Om chanting. Softly and deeply. Inhale. Ah. Shanti, Shanti, Shanti. Wonderful. Slowly releasing the hands, placing the hands on the ground, coming on a four position. Knees are slightly apart, hands are apart. Fingers are nicely pressing down, elbows are soft. Again, rolling the shoulder back. And when you're ready, inhale to arch. Exhale to round. Inhale to arch. Exhale to round. Inhale, arch. Exhale, round. Inhale, arch. पैर relax करो. Exhale, down. हाथ थोड़े पीछे. Inhale, knees खोलो. Knees खोलो. Exhale, perfect. Inhale, exhale. 2 more.
Vishram and relax. Just like we did up and down, let us attempt side to side. So when we go up, we sort of create a C shape, right? Or a U shape. And then when we go down, we create a ulta U shape. What are we going to create now is a C shape. So the hip and the ear come closer to each other. Then on the other side, hip and the ear come closer to each other. Yeah. So not turning the head, but dropping the head to the shoulder. This is the motion of the head. You're still looking at the ground and then you start the hip. Yeah. So first 2 times, let me see just the neck and then we'll start with the hip. Try. 3, 2, 1. To the right, to the left. नहीं, सर ऊपर नहीं है, ध्यान से देखो. It's a dog position, but at the same time, the head is not up. Head is in line with the spine, and you're just moving right. You're not looking right. See the difference? You're not looking right. The head is going to the side and then to the side. I can see myself on the floor. Yeah? Try. To the right, to the left. Better. To the right, to the left. With the hip, to the right, both of the things to the right, to the left. Correct. To the right, to the left. To the right, Dilpreet, move the hip and left. To the right, to the left. To the right. Good, Sheetal. To the left. To the right. Sumita ji, move the hip. To the left. To the right. To the left. To the right. To the left. And center. Super. Now, if you have knee trouble, you can come back and take a break. And if not, let's join the knees. Feet are together. And from here, taking the right leg back without disturbing the body, not arching or anything. The hip stays engaged, the core stays engaged, the right leg goes back. Taking the thigh up, not arching the back again, hip stays engaged. And flex the foot behind. Flex the foot behind. Let me see. शीतल, थोड़े से पैर और हाँ, हाथों का डिस्टेंस कम करो. करेक्ट. पीछे वाला पैर जमीन पे अच्छे से. जो टो है उसको रिलैक्स कर दो, लेफ्ट वाले के. हाँ, toe relax. Now go. Now take the right leg back. Good. Let's go, Dilpreet. Right leg back and up. From here, if you're comfortable, let's start moving. Right knee comes into the chest. You round the back. Again, the right leg goes out, but you don't arch the back. Yeah? So straight body and then curve. Then straight body and then curve. Let me see. Taking the leg in, 2, 3, 4 and out, 2, 3, 4. आराम से. In, 2, 3, 4. Out, 2. Breathe. 3, 4. Soft. In, 2, 3, 4 and out, 2, 3. झटके कम. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out, 2, 3, 4. In, 2, 3. Stay there. Now, if your knee is not touching or chafing the floor, then something is wrong. Because दोनों knees तो जमीन पे थी. अब सडनली ऐसा क्यों हो गया कि नी हवा में है? वो इसलिए क्योंकि हिप उठ गया. सो हिप को नीचे रखना है.
Whenever you're coming back, you have to slide through the floor. That's how you know that you're at the correct position. If your knee is not touching, then your hip is off or you're to the side. Okay? So be in center, engage the knee, and taking it down, slide through the floor and back up. Try. Slide and back up. And in, slide करते हुए अंदर, slide करते हुए बाहर, slide करते हुए अंदर. सुमिता जी सेम थिंग, नी जमीन पे टच होना चाहिए वापस आते हुए. यस. एंड बाहर एंड अंदर, बाहर, अंदर, बाहर जाते हुए लेग हेड भी बाहर, बाहर. टू मोर. इन एंड आउट, इन एंड आउट एंड होल्ड. कम ऑन. आज तो थकाएंगे थोड़ा सा हम आपको, थोड़ा सा. चलिए, जो पीछे लेग गया है अच्छे से उसको स्ट्रेच करना है पीछे. हिप को ऊपर उठाए बिना लेग को ऊपर उठाना है. हिप मसल का बहुत इस्तेमाल होएगा इसमें. आपने थाई नीचे गिर रहा है ना चांदनी, थाई को ऊपर उठाना है. थाई नीचे चला गया था ना एकदम, उसको ऊपर उठाना है. थाई को लिफ्ट करो. और लिफ्ट करो. नहीं, बैक में आर्च नहीं लाना. बैक सीधा रहेगा, हिप वहीं रहेगा. देखो मिरर में, लेग पीछे लेके जाओ. बिना बैक को मूव करे थाई को ऊपर ले जाओ. यस. ब्रीथ. Dilpreet, shoulders relax, head relax, elbows straight. And if you're comfortable, raise the left arm forward. Dilpreet, elbows bend nahi karni. Left arm forward, hawa mein. Hawa mein, hawa mein. Yes, breathe. 10, 9, breathe. 7, 6, smile. 4, yes. 2, 1. Slowly with control. Girna nahi hai, dhapad dhapad. Coming back. Take a break. We'll do the same with the other leg, other hand. Generally, a break is nice when you stay down and let your heart get that blood so that it does not have to do a lot for the head. Unless, of course, you have BP issues. Sorry? Ideally, yes. You can open your knees also for the resting position. Yeah. Okay. Now, for Chandni, I'm repeating how to be in the on-4 position is when your knees are open like this, your hands come closer, your elbow touches the knee. Elbow touches the knee. And hands are open in knee distance apart. जितना knee खुला हुआ है उतना ही hands खुलेंगे. ठीक है? Now keep the hands here, fingers open, lift the elbows. Lift the elbows. This हाथ वहीं, हाथ वहीं. हाथ नहीं हिलेंगे. Elbows lift करके come forward on 4 position. Yes. And पीछे से पैर खोलने. So this is your position. Okay? This is the distance. All right. Let's go on 4 position. And because we are already on single leg, so bringing both the knees together. Left leg goes back, controlled, and up. Flex the foot. Let me see. Left leg back and up. No pressure in the shoulder. Dilpreet, आवाज आ रही है? Okay. No pressure in the shoulder. आगे थोड़ा आसान लगेगा बट है इधर. आगे नहीं करना. हाँ. पीछे वाला टो रिलैक्स. नीचे वाला टो रिलैक्स. Yes. Engage. When you feel ready, balanced, start. Knee in, round the back. Knee out, straight back. Knee in, knee out. Touch the floor. Knee in, knee out. Knee in,
Knee out. Dilpreet, touch the floor with the knee. Knee in. Let the knee go through the floor. Knee out. Dilpreet, touch the floor with the knee. Knee in. Touch the floor. Knee out. Point the foot. Point the foot. Knee in. Let the knee slide through the floor. Knee out. Let the toes and knees slide through the floor. Touch करना है floor को. Knee in. Yes. Knee out. Two more. Knee in. Knee out. Knee in. Knee out and hold it. Leg को hold करना है बाहरी. Hold it. Flex the foot. Flex the foot. Hold the belly. शीतल थोड़ा नीचे देखना है. हल्का सा और. And now pull the belly into the back. Pull the belly into the back. नीचे से कोई belly को push करके ऊपर back की तरफ ले जा रहा है. ऐसा feeling लाना है. दिलप्रीत also. Pull the belly into the back. Make the back straight. Make the back straight. और दिलप्रीत और. Yes. 5, 4. थोड़ा सा hip down. 3. सिर्फ hip. यहाँ रहेगा hip. फिर leg जाएगा. 2. Hip down. 1. And slowly coming back. No coming back. Take the leg back. Arm forward. Opposite arm forward. Come on. Balance. Breathe. Ground yourself. Engage your core. And lift. Fly high. Okay. चांदनी मैं क्या कह रही हूँ, आपका हिप जो है ना टेढ़ा होके ऊपर जा रहा है, ऐसे ठुमका मार रहा है, वो अवॉइड करना है. लेग ऊपर ही रहेगा. हाँ, लेग ऊपर लेके जाओ. अब देखो, लेग ऊपर रखते हुए हिप को थोड़ा नीचे लाओ. हिप को लेग को नहीं लाना. लेग आपका ऊपर है, हिप भी ऊपर है. हिप को नीचे लाना है. ये इसको नीचे लाना है. ये. करेक्ट. ब्रीथ. 4. शीतल, बहुत प्रेशर आ रहा है बैक पे. एंगेज करो कोर को. 3, 2, 1. Slowly with control coming back. Take a break. Breathe. Slowly walking back with the hands. Knees together. Thumb in and fingers over the thumb. Placing the inside of the hand besides the navel. दोनों. ठीक है? Besides the navel. Pull the belly slightly in. Not slightly, actually, maximum in. And we have to touch the outside of the hand on the thigh. ठीक है? So ये engagement. तो आपके thighs और stomach के बीच में इतना distance है because of your hand. So this will pull in. अब यहाँ तो हड्डी नहीं है, यहाँ पे भी हड्डी कम है, तो दोनों में दबाव आने वाला है. ठीक है? And that दबाव is very good for your organs inside. But be sure that you're breathing. Be sure that you know what you're doing. If it's too much pressure, come back. Okay? Inhale and pull the belly in as you exhale. Reaching forward. Elbows back. See if you want to take the head down. Elbows up in the air. Elbows up in the air.
Inhale, slowly coming up. We'll do it once again. Just to remind you, this is the distance, not this. ऐसे नहीं रखना है, ऐसे. और जाओगे भी ऐसे, so this portion will touch the thigh. Okay? Try again. जब नीचे पहुंच जाओगे, elbows towards the sky. Elbows towards the sky. ठीक है? Try करते हैं. Pull the belly in, lift the spine, exhale and forward to down. Elbows up. Keep trying to pull the hip towards the heels, even if they're not touching. Do not leave the attempt. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale and coming up. Releasing the hands. All okay with the knees? दर्द तो नहीं आ रहा अभी किसी को? ओके, थोड़ा सा. ओके, तो अगर आ रहा है तो मैट को डबल कर लेना है उठा के. ठीक है? नीज के नीचे डबल. नीज थोड़ी सी खोल देंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे. टक द टोज इन and come up on the legs. Rolling the pelvis. You remember this? We did it extra last class. I told you how to roll the pelvis. Late away, we'll do the same thing here. So give me a pelvic roll 10 times. Roll and back. Roll and back. Ready? 3, 2, 1. We go. Roll and back. Roll and back. हाथ रखेंगे सब लोग ताकि मैं देख सकूं. Roll and back. एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे. Roll and back. 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 Good, everybody. Roll and back. Roll and back. Roll and back. Roll and hold it. Roll and hold it. Now find the lift in the spine. Roll and hold it. जिन जिन को मैं नाम ले रही हूँ अपने पैर थोड़े से ठीक करेंगे. दिलप्रीत, toes under towards the knees. Sheetal, toes under towards the knees. Anuja, toes under towards the knees. आपके पैर थोड़े खुलेंगे. खुलेंगे. हाँ, थोड़ा ज्यादा हो गया. नीज के पीछे एकदम. हाँ, और टोज और अंदर. टोज और अंदर. टोज और अंदर. ओके, ग्रेट. कीप होल्डिंग द पेल्विस, कीप रोलिंग द पेल्विस. उस रोल को रखते हुए हाथ पीछे ले जाएंगे बैक पर. दोनों हाथ पीछे बैक पर. वी आर गोइंग फॉर अ बैक बेंड. ओके, अपर बैक पे नहीं, मिडिल बैक पे भी नहीं, लोअर से भी नीचे, लोअस्ट बैक पे. हिप पर रखना है. हिप पर रखना है. ठीक है? कीप द पेल्विक रोल. Start taking the chest back, 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 back. Start taking the elbows back, 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 back. And then drop the head back. Breathe. 10. Breathe. Focus on the expansion. Push the hip forward, lift the chest up, and drop the head back. 3 things we are doing. Push the hip forward, roll the pelvis, take the chest up, and drop the head back. 5, 4, 3, 2, and 1. Letting go. Super. Super. आज के लिए इतना ही back bend. And now slowly take the hands up. Place the hands down on the floor. Tuck the toes in. We push back into a narrow mountain. Narrow mountain. And I want you to feel the stretch in the back of the thighs. Push the hip as back as you can. दिलप्रीत, पैर हाथ थोड़े से ज्यादा आगे ले जाओ. हाथ थोड़े से आगे ले जाओ दिलप्रीत. नीचे नहीं लग रहे. हाँ, try to push the
feet apart, feet apart. Try to push the heel. इतने ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं. हाँ. Try to push the heels down. Try to push the heels down. Try. Breathe. कोई बात नहीं, कोई बात. Welcome to the sessions. 2 हो गए ना तुम्हारे? अब तीसरा है. Third's the charm, है ना अनुजा? चलो पैर आगे, हाथ आगे लो मेरे पैर के पास. This is it. Breathe. 5, 4. दिलप्रीत हाथ थोड़े से और आगे लाओ, बहुत कम आगे हैं. और एटलीस्ट 6 इंच आगे लेके आओ. 3. नाइस शीतल. 2. नो कमिंग डाउन. 1. राइट लेग बैक. कम ऑन. राइट लेग बैक एंड अप. हवा में. कम ऑन. कम ऑन. कम ऑन. यस. एंड सॉफ्टली डाउन. लेफ्ट लेग बैक. अप 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 अप. सॉफ्टली डाउन. यहीं से हम मालासन में जाने वाले हैं. सो यू हियर स्टार्ट वॉकिंग बैक विद द हैंड्स. पैर खुले हुए हैं. टोज आउट if required, otherwise feet parallel. Bend the knees, take the hips down and push the knees out. ऐसे ही आ जाओ, जैसे आना है आ जाओ. करेक्ट. पैर खोलो थोड़े थोड़े. यस. डीप स्क्वाट. पुश द knees out. Lift the spine up. Breathe. And extend the arms forward. Let's attempt kakasana today. So for Chandni, I'm repeating. Rest everybody can start doing it with me. Chandni will watch once. Okay. Now arms have to go closest to the shin. Hands will be on the ground 10 inches to 12 inches away in front. Don't do it, watch it. Fingers are open. Hands will turn slightly in. Rest of us will do. Only Chandi will not do. From here, we lean forward. We start coming onto our toes only. And then we hook the leg onto the arm nicely, more nicely that we can. From here, hip lifts up. Lean forward until the elbow comes on top of the hand. Look forward, not in, and just try to balance on the hands. Jump नहीं करना. धीरे धीरे अपने आप बैलेंस समझ आ जाएगा. अपने आप पीछे से पैर फ्री हो जाएंगे और फिर पैरों को ऊपर पुल करना है. Coming down is you release the feet, place the feet down and come back. Let's go. Those who were watching, now we'll go. समझ आया? जब तक ये पोजीशन नहीं हुक होएगी तब तक पैर स्लाइड करता जाएगा. तो घुटना शुड बी ऑन दिस. ये देख रहे हो? यहाँ इधर भी आ सकता है पर एल्बो से नीचे नहीं, एल्बो से ऊपर. और एल्बो हमें करनी है बेंड ताकि ये एक टेबल टॉप बन जाए. ठीक है. ये टेबल टॉप बनेगा तभी तो टेबल पे आप कुछ रख पाओगे. ठीक है. इतने हाथ अंदर नहीं, थोड़े से हल्के से अंदर. चलो. कहाँ आ गए? अभी तो दिखाया, तभी मैंने कहा था करना नहीं है, देखना है. हाथ पीछे लेके जाओ. आई रिपीट. विल डू इट टुगेदर. सेकेंड टाइम. ओके. आर्म्स क्लोजेस्ट टू दी शिन. आर्मपिट्स आप यहाँ हो और नीचे जाना है. Hands in the front, fingers open, turning the fingers slightly in. हल्का सा अंदर. From here, lifting the heels off. एक बार फिर से wear your knees like a bag on the shoulder.
and leaning up with the hip, leaning forward with the body. सामने chest, सामने head. Breathe. बस इतना ही करना है जो लोग पहली बार कर रहे हैं. जंप नहीं मारना. जंप मारोगे आगे गिरोगे. Breathe. जंप नहीं मारना एंड लिप्स नहीं वो करना है टाइट. चलिए, देखा मैंने. टेक अ ब्रेक. ब्रीथ. डोंट डू एनीथिंग. सुमिता जी सामने देखना है तो होएगा. गुड दिलप्रीत. शीतल गुड. थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड शीतल. 1-2 इंच. पैर नहीं उठाओ, पहले लीन फॉरवर्ड करो. और आगे जा सकते हो 1-2 इंच शीतल, फिर हो जाएगा. 1 इंच और आगे. ब्रीथ. जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है. ब्रीथ. पैरों से थोड़ा आगे चल के आओ, आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है हाथों पैरों में. हाँ, अब करो. ब्रीथ. दैट्स इट. यू आर देयर. बहुत मुश्किल है, कोई बात. ये लोग भी अब अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत टाइम बाद. कोई बात. सांस नहीं लेते जब तो ऐसा होता है. ग्रेट. रिस्ट में आ रहा है आप कह रहे थे. एक रिस्ट में, दोनों में. ठीक है. एंड वी नीड टू वर्क ऑन द रिस्ट अ लॉट. स्माइली बॉल है घर पे, ले लो एक. 12 रुपए की आती है. 12 रुपए की आती है. माई सिस्टर एंड मी कॉल इट 12 rupees ऑफ फन. Just buy it. Keep on playing with it for the right wrist. Yeah? Make the muscles strong. Smiley ball. Done? Okay. Sitting back. Release. Extend the legs forward. Relax the legs. आज का tough part is over. Now we learn a new, not a new posture, but a very important posture, very basic posture, which is dandasana. Okay. So you have to make sure your heels are pushing out maximum, and at the same time your hip is pushing back maximum. Hip is pushing back maximum. When you are finding that extension, heel out and hip back, what is happening? The muscles in between are getting stretched. कौन सी muscles है? Calf muscles है, hamstring muscles है और glutes है. ये सब कुछ एक extension में है, एक stretch में. एट द सेम टाइम बाकी सब कुछ कॉन्ट्रैक्शन में, ऑपोजिशन में. क्योंकि हम टोज अंदर खींच रहे हैं तो हमारी ये वाली मसल्स जो है ये एक कॉन्ट्रैक्शन में, ये वाली मसल्स एक कॉन्ट्रैक्शन में. क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में है तभी पीछे वाली एक्सपेंशन में है. क्योंकि मैं एक साइड से बेंड कर रही हूँ तभी दूसरी साइड स्ट्रेच हो रहा है. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ बेंड, अ कॉन्ट्रैक्शन, एंड बिहाइंड दिस इज अ एक्सटेंशन. सो आई वांट यू टू फील दैट डिफरेंस. इधर बहुत डिफरेंस फील हो रहा होगा, इधर बहुत डिफरेंट फील हो रहा होगा. फाइंड दैट कि क्या डिफरेंट है, व्हाट आर यू फीलिंग. ठीक है. हैंड्स बाय द साइड and rolling the shoulders back, lifting the spine up. Closing your eyes if required. If you're comfortable. If required, keep them open. What we're doing is heels pushing out, toes pointing in towards your chest. Toes pointing in towards your chest. Making sure you're sitting on the hip bone and you're keeping the tailbone free. Breathe. You need to breathe a little more. Take the hands on the floor, bend the knees a bit, and roll the hip so that the tailbone is off the ground. I repeat for Dilpreet. Dilpreet, hands on the floor, bend the knees a bit, roll the pelvis forward so that the hip is on the floor and the tailbone is off the floor. Chandni, head in, allow the spine to nicely extend. Don't look up. Here. Breathe. Feel the difference between the back of the legs and top of the legs. Dilpreet, don't look in, shoulders back, lift the spine. Come on. Dilpreet, are you listening? Dilpreet का कैमरा अटक गया मुझे लग रहा है. Dilpreet, bend your knees a bit. Roll the hip forward.
Allow the tailbone to lift off the ground. Tailbone touch कर रही है. Imagine आपके बाल बहुत लंबे हैं, hip तक जा रहे हैं, but you don't want your ball to touch the floor. What would you do? You will try to extend your spine up, right? That's what I want you to do with the tailbone. Your tailbone is touching the floor. You need to lift it off. Find new ways that you can lift the tailbone off. Sheetal, everything is good, but बहुत ज़्यादा तने हुए हो. Breathe a little. Allow the body to enjoy this posture, not be tensed a lot. अनुजा थोड़े पीछे जा रहे हो. हल्का सा नी बेंड कर लो, हल्का सा लिफ्ट कर लो. Lift the tailbone. Same for Chandni. Knees थोड़ी सी बेंड करो. बेंड करो. नीज को बेंड करो. बेंड क्या होता है? बेंड. नाउ लिफ्ट द स्पाइन अप. यस, ब्रीथ. जिन जिन का स्पाइन ऊपर सीधा हो गया, वो धीरे धीरे अपने बेंड को स्ट्रेच में बदल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द स्पाइन. ये बेसिक पोस्चर्स में आता है, बट इसका नाम ही इतना अमेजिंग है, दंडासन. दंड का मतलब क्या होता है? दो होते हैं, एक पनिशमेंट और एक दंडा. हमें दोनों बनना है. डंडा बनना है एकदम सीधा, दो डंडे, एक नीचे एक ऊपर सीधा, और ये पनिशमेंट जैसा फील होता है. Whenever I take class in school and students are making noise, I ask them not to raise their hands but sit in dandasana. Their spine gets a lot of strength. हम लोग भूल चुके हैं नीचे चौकड़ी मार के बैठना. थैंकफुली मेरे स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, हम रोज असेंबली में जाते थे और नीचे बैठते थे चौकड़ी मार के. रोज, मंडे टू फ्राइडे, एक्सेप्ट मंडे स्टैंडिंग असेंबली होती थी. So that helped me keep my hips open. That helped me keep my spine. Thanks to my class teachers who used to poke. कि ऊपर सीधे बैठो. So all of those things help in, in our formative years. Otherwise, and then it gets very hard to sit straight. Toes in, or yes, toes. Toes का खेल है बहुत बड़ा दंडासन में. स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेच नीचे आ रहा है, ये स्ट्रेस है, कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेस है. खिंचाव नहीं होगा, टेंशन होएगा. बताओ, खिंचाव है, टेंशन है? गुड, अच्छी बात है. Tension in the quadriceps and खिंचाव in the hamstrings is all we want for bodily strength. That's why we're doing dandasana. Okay, come out. ज़्यादा हो गया है ना? Relax. Shake your legs. We go into right leg bend. Right leg bend, but बहुत ज़्यादा lean नहीं करना है, ठीक है? अभी भी we are trying to be on our hip. Bend as much as possible. जैसे मैं अगर हूँ और मैं दंडासन में हूँ and I want to maintain my दंडासन, I am able to fold my leg only this much. इससे ज़्यादा करूँगी तो पीछे जाना पड़ रहा है, right? So fold the leg just enough so that you can hold your dandasana. Raise the arms up इसके बाद. And today we'll do vakrasana. We'll twist. We'll place the hands on the side. ये center में नहीं है, इसी हाथ की line में है side. And then we find the twist. Yes. अगर comfortable लगे तो धीरे धीरे इस लेग को ऊपर ले आना, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ऊपर लाओगे आपका वेट पीछे वाले हाथ पे बढ़ जाएगा. करेक्ट? क्योंकि अभी तक सीधे थे, अब ये बेंड करा, बॉडी पीछे गई. पीछे तो जानी नहीं है, मैं मना कर दूंगी, तो आप इस हाथ से पुश करके ऊपर लाओ, तो वेट आ गया हमारे आर्म में. हमारा काम धीरे धीरे आर्म का हो गया. हमें काम रखना है कोर का. सो इट्स ओके इफ द फुट इज हियर. यूज द बॉडी वाइजली. ओके, लेट्स गो. राइट लेग. Fold the right leg just enough so that you can maintain your dandasana. Flex the left foot. Flex the left foot. Keep it active. Raise both the arms up. And let the body twist to the right. Left arm hooking on the right thigh. Right arm behind.
दिलप्रीत राइट पैर पूरा जमीन पे, नहीं पैर पैर, सोल ऑफ द फुट. यस. ब्रीथ. ट्राई टू रिलैक्स द बैक हैंड, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना. And find your twist in the spine. We've done the spinal understanding, how spine has 26 movable vertebral columns. 26 movable vertebral columns. हर एक का डिग्री है, 15 डिग्री ट्विस्ट पॉसिबल है. तो ट्विस्ट at least each spinal vertebral what do you call vertebra should be able to twist 5 degrees. I'm not saying 15 degrees. 5 degree each vertebra. 5 into 26, around 130. 130 डिग्री ट्विस्ट होने चाहिए. आप 90 डिग्री भी नहीं हो रहे अभी. 130 डिग्री ट्विस्ट होना है. और आपका हेड शुड बी 180, क्योंकि जो नेक वाला वर्टेब्रा है दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 90 डिग्री रोटेशन. आई थिंक 85 डिग्री रोटेशन. तो वो 85 डिग्री भी तो ऐड करो फिर. 130 प्लस अराउंड 50, 180 डिग्री ट्विस्ट कर सकते हो आप आराम से. उसके अलावा तो है ही. ऑल राइट, स्लोली कमिंग बैक. चांदनी कह रही है कहाँ आ गई हूँ मैं, क्या कह रही है इंसान. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लोअर बैक से शुरू हो जाओ. ईच वर्टिब्रा कैन गिव यू एटलीस्ट 5 डिग्री ऑफ रोटेशन. यूज दैट. ईच वर्टिब्रल कॉलम भी मैंने हेड से करा ही नहीं है, शोल्डर से करा भी नहीं है, चेस्ट से भी नहीं करा. इट इज द स्टमक. नाउ चेस्ट, नाउ शोल्डर, नाउ हेड. Yes, use that. We have a lot in the lower back. अपर बॉडी तो हम यूज करते ही हैं, लोअर बैक को करो सबसे ज्यादा. लेट्स गो. अदर लेग. लेफ्ट लेग फोल्ड, dandasana maintain, and hands up in the air, taking them over to the left side. Left side, hook, lift the spine, start from the bottom, start from the waist. Find that twist. फाइंड दैट ट्विस्ट. हम ये वाली मसल्स यूज नहीं करते हैं इसलिए बहुत मुश्किल होता है एकदम से करना. बट फाइंड दैट ट्विस्ट. फाइंड योर लोअर वर्टिब्रास एंड फाइंड द ट्विस्ट. You have to discover it for yourself. Sorry that I cannot do it for you. You have to do it for yourself. Close your eyes. Observe the placement of the vertebral columns and start twisting from the very bottom that you can. सुमिता जी, लेफ्ट पैर जमीन पे रखना है. अगर लोअर बॉडी का ट्विस्ट मिल गया तो फिर अपर बॉडी पे भी थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाएंगे और ट्विस्ट करेंगे कि 5 डिग्री तो जा ही सकता है वो, चलो 60 डिग्री जाके देखते हैं. लोअर बॉडी बिल्कुल नहीं जा रही थी तो उसको हमने 5 डिग्री पे रोक दिया. अपर बॉडी जो जा रही है, जो वर्टिब्रल कॉलम्स जा पा रहे हैं, उनको और ट्विस्ट करना है. क्या होगा जब आप उनको और ट्विस्ट करोगे? आपकी मसल्स और ट्विस्ट होंगी. आपकी मसल्स और ट्विस्ट होंगी तो वो आपके बाकी बोनी स्ट्रक्चर को भी तो ट्विस्ट करेंगी. तो जो अभी ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे वो भी ट्विस्ट होने लगेंगे. उनको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ मूवमेंट करना होता है लाइफ में. किया ही नहीं ना कितने टाइम से. उनको समझ आ जाएगा, वो भी सीख जाएंगे. 3, 2 and 1. Slowly coming back. All right. Lying down onto the back. Good work. Before we go into Shavasana, hug your knees into the chest. Hug your knees into the chest. I did not realize where the 1 hour went. Did you realize or did you not? If you did, raise your hands. I'm saying I did not realize where did the 1 hour go. Anna? Time was running fast in E38 Rajouri Garden basement.
Okay. Keep hugging your knees. Just massage your back by creating circles with the knees. Yeah. With your own pace, own way. I had more to share with you today, but sadly, this is the time we get. Today, while we are massaging the back and while we are going into Shavasana, I want you to take some time out and just review your progress on your own. When you started or resumed, what was the date? What was the month? How did we start? How was your first class? This activity might not make a lot of sense for Chandni, but do it anyway. How many days have you practiced? What is your intention throughout the days? And then slowly visualizing yourself throughout the days, throughout the practice. There must be some highlights that you must have collected through the practice days.
Slowly moving the fingers and the toes, bringing the legs together, feet together, interlocking the fingers, taking the arms over behind the head. Deeply inhale and stretch the body completely. Stretch, 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 stretch. Exhale and release. Everybody turning over to their right sides. Any direction, no problem. With the left hand pushing into the ground. With the eyes closed, slowly sitting up. Any direction. Taking a moment to bless yourself with all the energy you've created in the class and classes. Rubbing the palms together. Applying the warmth to the eyes, to the face, to the neck and shoulders, arms, and rubbing together again. This time on the head, back, shoulders, chest, and abdomen. One last time. Starting from the middle back, lower back, hip, whole of the legs and feet. Gently blinking the eyes to open, looking straight into the palms. Dhanyavad. Thank you. Have a wonderful day. See you tomorrow with Shweta ma'am and then day after with me. Bye bye.